Okay, in previous class we have studied about Z transform as well as the ROC and how to find out the ROC we have seen. Now today we will discuss about the properties of Z transform, which is very much important to before applying Z transform to any system, because properties is one of the thing which can determine the best environment for doing the transformation. So first of all, Z transform has, we will see the properties of Z transform. So properties of Z transform. So first of all, the property is linearity. Linearity property of the Z transform. So how we will calculate the linearity of the system, because Z transform is nothing but a system through which we can transform a signal from one domain to another domain. So can anyone tell me how we will find out the properties of linearity of a system? How we will find out the linearity of the system? Anyone? Anyone from you? How the linearity will be checked of a system? Anyone from six of you? How we will check the linearity of a system? Am I audible? हाँ बोलो आकाश, बोलो। लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोग कैसे चेक करेंगे, या लिनियरिटी ऑफ कोई भी सिस्टम को हम कैसे चेक करेंगे? सर एक इनपुट x1t दिए थे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y आउटपुट कुछ आएगा y1t, That is फिर एक और इनपुट देंगे x2t, फिर उस okay. That is whenever we are going to check the linearity, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दो सिग्नल्स लेंगे, that is two input signals लेंगे. So that is whenever we are going to check the linearity property, that weighted sum of two signals must be equal to weighted sum of individual Z ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो सिग्नल लेंगे, दैट इज लेट इफ x1n is first input and x2n is the second input, then x1z is the Z transform of x1n, I can write this, and x2z is the Z transform of x2n. Okay, now we have to check whether Z transform of ax1n, that is the total sum, total Z transform of the output, ठीक है, कि x1 और x2 दो सिग्नल है, दोनों को सम करो और उसका Z ट्रांसफॉर्म निकालो. So that Z transform will look like this. It must be equal to ax1z
प्लस बी एक्स टू जेड। दैट मीन्स सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो लाइक एक्स वन एन, इसका एक कोफिशिएंट लेंगे दैट इज ए एक्स वन एन एक्स टू एन, इसका एक कोफिशिएंट लेंगे बी बी एक्स टू एन, एंड देन इसको हम ऐड करके ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम का आउटपुट देगा वो क्या है, ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन, एंड देन वी विल do the z transform and we will get z transform of ax1n plus bx2n। ये हो गया फर्स्ट केस, दिस वन, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू x1n, दैट इज ax1n, सॉरी पहले हम कोफिशिएंट नहीं डालेंगे, इसको z ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको z ट्रांसफॉर्म ने whatever we will get, what we are getting, that is, and second x2n z transform and we will get x2n, then we will feed it to a system, दोनों को हम लोग एक सिस्टम में डालेंगे, एंड सिस्टम में डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, a x1 of z, that is nothing but this one, plus b x2 z. So if both equation will be same and both resultant will be same, then I can say z transform is the linear one. So linearity is the one of the properties of z transform. So we will check this. So proof of linearity property of z transform. Proof. So now मैं पहले क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ूंगा, a x1n प्लस b x2n, इसका z ट्रांसफॉर्म. So in this case this is the signal. So as per the formula z of x of n, ये क्या होगा, समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n. सो यहाँ पे देखो x ऑफ n z टू द पावर माइनस n. सो इसको अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इफ यू विल पुट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्मूला, देन व्हाट वी विल गेट, ax1n plus bx2n, that is equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity. Instead of x of n I will put this one, so ax1n plus bx2n z to the power minus n. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, समझ में आया सबको? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay. So now we will simplify the equation. So now यहाँ पे समेशन है, so separate the equation into two part. n equal to minus infinity to plus infinity a x1n z to the power minus n plus n minus infinity to plus infinity b x2n z to the power minus n. Now in this part, in this equation, a is a constant and in this equation b is the constant. So take a and b outside the summation symbol. So a n equal to minus infinity to plus infinity x1n z to the power minus n.
plus b, n equal to minus infinity to plus infinity, x 2n, z to the power minus n. So now compare this part with this part. यहाँ पे देखो x of n z to the power minus n, तो इसका फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x of z, ठीक है। तो यहाँ पे x1n into z to the power minus n, so I can represent it in terms of x1z plus b x2n, यहाँ पे xn xz हो रहा है, x2n, so x2z. Okay, so this is equal. So this is equal to this one. Or if you will not getting this point or you are confused about this point, so I can write instead of this, I am adding an additional step, that is x1z z to the power minus n is nothing but the z transform of x1n. So a into z transform of x1n plus b into z transform of x2n. So this can be written as x1z and this can be written as x2z. So a x1z plus b x2z. So it is proved that total summation is equal to individual summation of the z transform. So I can say z transform has linearity property. Got it? Understood? If yes, then I will move to the next slide on next property. Is it clear to everyone? If yes, then I will move to the next slide. Is it clear? Yes, sir. Okay. So I'm going to move to the next slide. That is, we will check another property or we will study about another property of Z transform, that is time shifting. Time shifting. Okay. So in this case, if x of z equal to z transform of x of n and initial condition for x of n are 0, then as per time shifting property, x of n minus m equal to x of z z to the power minus m, that means delay, जितना पोर्शन डिले होगा z का पावर उतना ही होगा, ठीक है, that is the statement. So this is the statement for time shifting property and we have to prove this. Okay, so now proof, we have to prove this. So यहाँ पे देखो, I have to find out the z transform of this by putting the by putting this equation into the traditional formula of z transform. So x of n minus m, that must be equal to, as per the formula, n equal to minus infinity to plus infinity, x of n रहता है यहाँ पे, तो x of n बैठता, यहाँ पे तुम्हारा x of n minus m है, so instead of x of n I will put x of n minus m into z to the power minus m. So I can write this
as per the formula of Z transform, that is Z transform of x of n equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n. Okay, now simplify the equation. This equation I have to simplify. Now let n minus m equal to a. Okay, so what will be the value of n? N equal to a plus m. Okay, so now put this into this equation. So now we will get what we will get, x of n minus m equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity. Instead of n minus m, I will put x of a z to the power minus, instead of n I will put a plus m, a plus m. So यहाँ पे देखो, I have to replace this. ओके, सो यहाँ पे n कहा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? x ऑफ n था, तब n का वैल्यू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आ रहा था. सो नाउ x ऑफ a आ चुका है. सो इंस्टेड ऑफ n आई विल राइट a. नाउ यू विल क्वेश्चन हाउ? दैट इज n minus m equal to a. So n equal to a plus m. So if n tends to minus infinity, then a also tends to minus infinity, because a equal to n minus m. Minus infinity minus m, that means also a tends to minus infinity, as well as n tends to infinity. तब क्या होगा? a का वैल्यू n minus m, that is infinity से तुम कुछ माइनस करो तो obviously it will also be infinity. So a also tends to infinity. So a, instead of n, a equal to minus infinity to plus infinity x of a z to the power minus a plus m. Now I have to simplify this. Okay, so now a equal to minus infinity to plus infinity x of a z to the power minus a into z to the power minus m. So now देखो, ये भी a के ऊपर डिपेंडेंट है, ये टर्म भी a के ऊपर डिपेंडेंट है. तो this is z to the power minus m is the term which is not dependent on a. So it can be taken outside of the summation. A equal a tends to, oh sorry, a equal to minus infinity to plus infinity x of a z to the power minus a. Now इस इक्वेशन को देखो, इट कैन बी रिटन एज x ऑफ z. ठीक है, तो यहां पे देखो, x के अंदर फंक्शन n हो या a हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज डिनोटेड, सिंपली डिनोटेड बाय x ऑफ z. सो z transform of this x of a also be denoted of x of z. So now this z to the power minus m into this term can be denoted by x of z. So into x of z. So hence it is proved that this much is equal to that much. Okay, so now this is the time shifting property. ठीक है, ये सबको समझ में आया? If yes, raise your hand. If you are getting this point, raise your hands. Raise your hand. Ravi, Preeti, do you understand this topic? That is time shifting property. Ravi, are you there? Ravi, are you there?
Preeti, are you there? Unless and until I will get your response, I will not move ahead. So Ravikant Murmu, are you there? और जस्ट फोन को ऑन करके चले गए. नहीं सर. Do you get the point? Yes or no? Yes sir. Okay. And Preeti, what about you? So, just क्या हुआ, कहाँ गए थे? Do you get the point? My question is that. yes, sir. Okay. Okay. I'm going to move to the next slide. Next is multiplication with exponential, which is one of the most applied topic in the Z transform. That is multiplication by an exponential sequence. नाउ किसको मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये प्रॉपर्टी के अंदर है. सो इन दिस केस द स्टेटमेंट इज इफ x of z is the z transform of x of n, then that means मेरा इनपुट क्या है, x of n है. नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनपुट विथ एन exponential sequence like a to the power n, let it be. So then z transform of a to the power n x of n equal to x of this one. Okay. So now if any exponential sequence is multiplied with the input, then the output will be this. That is, this a to the power minus 1 z transform will be there. Okay. Now we will see how it will be proved. So proof. So यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है, x of n है और उसको हम मल्टीप्लाई किए a to the power n से, तो मेरा फाइनल इनपुट है x a to the power n x of n. So now z to the power z ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x of n z to the power minus n, and it can be denoted by x of z. ओके. नाउ यहां पे मेरा इनपुट क्या है, एक a टू द पावर n xn. सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n xn कैन बी रिटन एज n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a टू द पावर n xn z टू द पावर माइनस n. ओके. नाउ यहाँ पे मेरा मेन क्राइटेरिया है, यहाँ पे मेरा मेन इक्वेशन को अरेंज करना है. नाउ रीअरेंजिंग, देखो यहाँ पे x का फंक्शन n है और यहाँ पे देखो z का भी पावर n है और a का भी पावर n है. z का माइनस n है, a का प्लस पॉजिटिव n है. तो हम क्या करेंगे, जिसका पावर n है उन सबको एक साइड कर देंगे. सो नाउ रीअरेंजिंग द सीक्वेंस और द इक्वेशन वी विल गेट x of n को यहाँ पे ले लो z to the power minus n and a to the power n. So now मुझे पावर एक साथ मिल गया. नाउ मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ कर दूंगा. तो यहाँ पे देखो z टू द पावर माइनस n में पावर को डिफाइन किया जाता है फॉर्मूला में. तो फॉर्मूला में जिस पैरामीटर है, दैट पैरामीटर शुड हैव द माइनस n power. So we will represent this z and a both have n in the power. So I have to represent it in the form of
the parameter having minus n in the power. So how we will do this? N equal to minus infinity to plus infinity x of n a to the power minus 1 into z to the power n. अब देखो, सॉरी, z to the power minus n. अब देखो मेरा पावर, ये जो a टू दी पावर माइनस वन जेड, ये एक पैरामीटर है जिसका पावर माइनस एन है, ठीक है, जो मेरे फॉर्मूला के साथ रिजेंबल हो रहा है. एक्स ऑफ एन एक है, एक्स ऑफ एन इधर है, यहाँ पे एक पैरामीटर जेड पैरामीटर है जिसका पावर माइनस एन है, यहाँ पे a टू दी पावर माइनस वन इंटू जेड एक पैरामीटर है जिसका पावर माइनस एन है. सो नाउ ऑब्जर्व दिस इक्वेशन. यहाँ पे z का पावर माइनस एन है, सो दैट्स व्हाई आई विल पुट x ऑफ z. ठीक है, तो यहाँ पे अगर z के बदले y का पैरामीटर माइनस एन होता तो हम क्या करते हैं, x ऑफ y. ठीक है, तो जिसका पैरामीटर माइनस एन पावर होगा, nth पावर होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स. सो यहाँ पे मेरा माइनस एन किस पैरामीटर का पावर है, दैट इज a टू द पावर माइनस वन जेड. सो इट कैन बी रिटेन एज x ऑफ a टू द पावर माइनस वन जेड. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n. सो कैपिटल X ऑफ जिस पैरामीटर का पावर माइनस n है उसको हम इधर लिखते हैं. तो यहाँ पे देखो इस पैरामीटर का पावर माइनस n है, सो हम लोग x के अंदर इसको लिखे. तो ब्रैकेट को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, so that will be confusing for you. Okay, so this one. So it can be proved that, or it is proved that this equal to x of a to the power minus 1 z. Okay, got it? Again raise your hand if you are getting my point. If you are getting my point, raise your hand. Again, two hands are not raised. सर, हाँ बोलो. सर इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना. ओके, देखो ये है मेरा जो प्रॉपर्टीज है. इस प्रॉपर्टीज के अंदर स्टेटमेंट किया जाता है कि अगर मेरा किसी भी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के साथ मेरा इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मेरा जो z ट्रांसफॉर्म होगा with that input which is multiplied by an exponential sequence like a to the power xn, तो इसका अगर z ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका z ट्रांसफॉर्म का वैल्यू आएगा, कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस, के स्टेटमेंट दे दिया मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको रट्टा मार ले. ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे, बिकॉज वी आर फ्रॉम टेक्निकल फील्ड, वी हैव टू प्रूव एवरीथिंग. सो प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या मिल रहा है, मैं जानता हूं मेरा जो इनपुट है दैट इज x ऑफ n. तो x ऑफ n अगर मेरा इनपुट है, कोई एक्सपोनेंशियल सीरीज या सीक्वेंस उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो whatever we are getting that is written in this format, that is x of n z to the power minus n equal to x of z. और अगर इस सीक्वेंस को हम लोग गौर से देखेंगे तो देखोगे x ऑफ z जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल है, x का फंक्शन कौन सा हो रहा है, जो पैरामीटर का वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर माइनस एन है, जो पैरामीटर का पावर इस इक्वेशन के अंदर माइनस एन है. ठीक है, तो उसी में हम लोग x का, कैपिटल x का फाइनल आउटपुट को लिख रहे हैं. अगर यहाँ z के बदले मेरा a होता तो इट कैन बी रिटन एज x ऑफ a. अगर ये b होता तो इट कैन बी रिटन एज x ऑफ b. तो यहाँ पे ये z ट्रांसफॉर्म है तो ये z होगा, तो यहाँ पे मैं z लिखूंगा. ओके, सो दिस इज द
way to represent the Z transform. Now यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? Now I have to multiply an exponential sequence to the input. तो यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है? X of n है. So I have to multiply a to the power n with x of n. So if I will, after multiplying a to the power n to x of n, I am getting this function. And if you will put this as an input and put it in the formula, then instead of xn, I will put a to the power n xn. Okay, I am putting this one and z to the power minus n. So in this case, I have to rearrange the, just a minute. In this case, you will see that x of, instead of the input xn, I am putting a to the power n xn. So now we will put it in the formula and we will get this term. Now in this term we will see there are two parameters having power n and one is the function of n. Okay. So now we will just rearrange the equation, and the equation, we will arrange the equation in such a way that function of n will be in one side and in the other side there will be the parameters who have n in their power. So यहाँ पे देखो x of n is the function of n. सो इसको मैंने एक साइड कर दिया, मल्टीप्लाइड विथ z एक पैरामीटर है जिसका पावर n है माइनस n, और a एक पैरामीटर है जिसका पावर n है, दैट इज a टू द पावर n. सो इस दोनों को एक साथ कर दिया. तो मैं अब इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है x of n z to the power minus n, that is one parameters having minus n in his its power. so इस फॉर्मेट में मैं इसको लिखूंगा. So if I will write in this format, I will get this one, that is x of n a to the power minus 1 into z to the power minus n. So ये इस फॉर्मेट में लिखा हूं. तो देखो इसके साथ में अगर इसको कंपेयर करूंगा तो देखोगे z के बदले यहाँ पे ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है. Yes or no? Instead of z in this Yes, sir. equation it is written. So देखो ये फॉर्मूला अगर मेरा राइट किया, इस फॉर्मूला को अगर मैं x ऑफ z लिखता हूं, क्योंकि z का पैरामीटर माइनस n है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि इस पोर्शन का पैरामीटर पावर माइनस n है. यस और नो? अगर यहां से तुम Yes, sir. z को हटा दो और a टू द पावर माइनस 1 z रख दो, तो यहाँ पे भी वो लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस 1 z. यस और नो? Yes, sir. यहाँ समझ में आया? So that is the statement, that is if I am multiplying any exponential function to a sequence and then z transform it, then that exponential function will be the multiplied with the फंक्शन ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म. दैट मीन्स अगर मेरा तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म कोई भी सिग्नल का, इट विल लुक लाइक दिस, लेट इट बी, ठीक है, कि वहां पे एक सीक्वेंस रहता है लाइक दिस सीक्वेंस अगर रहता है, तो अगर मैं इनपुट को एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो एंटायर जेड ट्रांसफॉर्म है उसका फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. दैट मीन्स multiplying with an exponential sequence will affect the entire z transform of the sequence. So that's why in this case we will this is the very important topic on z transform, that is multiplication of any sequence with the input. ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना. ठीक है, I think from 10:30 you have class of Amit sir, so I will not continue much more.
for today, that much for today. Next class we will move to the topic of two or three others properties of Z transform, and after that we will go for इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कि अभी तक तो हम लोग सीक्वेंस लिए थे, उसका जेड ट्रांसफॉर्म कर लिए. नाउ मेरा कोई भी चीज टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मैं अगर किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्म वर्जन से मैं उस सिग्नल को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्शन कर पा रहा हूं कि नहीं. अदरवाइज the entire concept behind the communication will be failed. So in next class we will see few properties of Z transform, and we will start the inverse Z transform process so that we can see in this section. Up to this we had seen that from an input we can find out the Z transform, and in the next class whenever we will do the inverse Z transform, we will see that from the Z transform signal we will find out the inputs. Okay, so I am going to conclude the session right now. Okay,